Good evening, sir. Antim, sir, this is Priyanka. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Antim, sir? You are audible. Thank you, thank you. Antim, sir, shall we start the session?
Namaste everyone. Good evening. Please join. Good evening, sir. Good evening to all of you. Please join. Good evening, sir. Good evening. Okay, a request to everyone, please join. So after that, we will start. So before starting the session, please bring the treatise 6. And I request to each and everyone, please on your videos and join us. Good evening, sir. Good evening, Devika ji. How are you? Fine. Good evening, sir. Good evening. जय जिनेन्द्र सर. जय जिनेन्द्र. प्लीज बाकी लोग भी ज्वाइन कर लीजिए. तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है हम इसको एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं. नो नीड फॉर द 2 days. एक दिन में समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बात करने वाले. Okay, so now we start with my today topic, extraordinary verses. कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सेस का कंसेप्ट समझ में नहीं आया? जस्ट हैंड राइज प्लीज. So how many students they are not understand the concept of the EOB? Okay, thank you. Okay, so now introduction of EOB. This is a chapter 1, extraordinary verses. So these are the all slide contents by the treatise 6. So you can also read your treatise 6. The word extraordinary refers to wonders, rare, strangers, something, explanation, unusual, and unbearable. The word vessels as a large, least linear container. The largest vector of vessels of the water on the earth are the sea or the ocean. The largest rivers of the qui in the human body are these extraordinary vessels. The main meridian of the like river and 8 extraordinary vessels is just like a rivers or the dams or the seas, where excess of the energy stored and where excess of the energy stored and keep reserved for the use as and the when needed. So now the meaningful thing is the all extraordinary vessels is a different part of the meridians. This is not a meridians. This is called extraordinary vessels. Extra means these are the extraordinary. So it is just like if sometime you feel anyone is just like an extraordinary person. So this is just like extraordinary vessels. So this vessels is as per the concept of the TCM. Our 12 meridians or our 12 collaterals, they are just called a river. But these are the all extraordinary vessels is called the sea.
The extraordinary vessels run behind the 12 meridians. They interconnect with the 12 meridians and correspondingly allow for the board deep effects within the body. Six of the extraordinary vessels has a master and couple point on the pair of the mean meridians. The governing vessels and the conceptual vessels have their own points. So these are the different points we will discuss after the concept. So first, I introduced you the functions of the extraordinary vessels. Functions of the extraordinary vessels. The four yin vessels treat the manly organ deeper, more yin, and the chronic problem. So we are using the four yin vessels by the more yin are chronic problems. So we are using the all four yin vessels mainly treated organs deeper are the more yin and chronic problem. The four yang vessels treat mainly non-organ, superficial yang and the acute problem. So first you can think the four yin vessels, this is for the yin are the chronic problem, and the four yang vessels treat by the yang are the acute disease. Treatment of the EOV is able to correct structure imbalances, deformities, and extraordinary shape of the body. The other main function of the EOV is to act as link between the pre-heaven and the post-heaven queen. The musculoskeletal problems can be treated via the 8 EOV. The EOV treat the root problem before attending to the local symptoms. The EOV protect the body from the exterior pathogenic factors. So these are the mainly focus on the external factors or external pathogenic factors by the circulating of the defensive queen. So next slide. Just 1 minute. Yes, these are the extraordinary vessels points we will discuss. So these are the body area related to EOV points. As per the master and couple points rule, these are the front side, back side points. The each extraordinary vessels has its master points. The each extraordinary vessel is coupled with the any other extraordinary vessel. The first meridian is called mean meridian, and the second meridian is called the couple meridian. The master point and couple points interexchange and exchange the energy enhanced treatment is given on the master points and its meridians. Each yin meridian has a couple and yang meridian. Similarly, in 8 extraordinary vessels, each vessel has coupled vessels. But in this coupled vessels of the yin vessels is also yang, yin, and the coupled vessels of the yang vessels is yang. The balance and transactions of the energy does not happen in yin and yang, but in yin master vessels and yin coupled vessels. In the master point is of the upper part of the body, the couple points is the lower part of the body. If the master points is of the lower part of the body, then the couple points of the upper body. So these are the formula I will discuss. The upper and the lower parts of the body establish balance
in the upper and the lower parts of the body. This balancing the body and cure the disease. Each extraordinary vessels has starting points and ending points. The sum of these extraordinary vessels also have their on Z-clef points. Z-clef are the gap in the body where Qi and the blood coverage and the collect. When the flow of the body bioenergy in the body is obstructed due to some reason, then this obstruction Qi energy gets accumulate at the Z-clef point. That's why Z-clef point is also called accumulating points. When the treatment is given on the Z-clef point, the circulation of Qi is affected deep inside. And these are the right left theory. According to this, according to this theory, left is yang and right is the yin. The body can be balanced. Accordingly, treatment can be given on the male and female differently. For men, treat the master point of the left side and couple point on the right side. For women, treat the master point of the right side and couple point on the left side. For example, to treat the conceptional vessels in the main, treat L7 on the left and K6 on the right. In the women, we treat L7 on the right and K6 on the left. The master point is treated, then first and then couple points to be treated. These are the basic principle and concept of this theory. So now I close my PPT. So now we will discuss the concept. Okay. So now I am discussing the chapter 1 extraordinary vessels. So I will explain you the introduction of the extraordinary vessels, same as per is our treatise. Sir is also mentioning. Sir is also mentioning the poetry. The function of the extraordinary vessels, yin vessels, we are using for the structure, yang vessels for the function, yin vessels for the chronic disease, and yang vessels for the acute disease. Always you remember. So these are the source of the treatment. The both yin vessels and the yang vessels, both are the connective vessels, and both are the very good for the chronic and genetical disease. These are the both for the yin vessels and yang vessels. So we are using the extraordinary points rather than TCM points. So please open the page number 13 in your treatise 6. So sir is also mentioned the each extraordinary vessels has its master points. Because these are the practical subject, this is not a deeply theoretical subject. Each extraordinary vessels is coupled with any other extraordinary vessels. The first meridian is called the main meridian and the second meridian is called couple meridian. A list of the main meridian and the couple meridian is given the below table. The conceptional vessels, main meridian, yin heel vessels is called couple meridian. So now effects of the EOV treatment of the blood and yin and yang, the Qi. Basically, all extraordinary vessels is based on the energy concept, Qi, blood. Yin controller is increasing the blood hormones.
And yin avrodhak, nivarak avrodhak is a balance of the energy. The yin arohi is yin energy balancing upwards to downwards, and yin regulating is regulate the blood. Yin regulates, and it goes yin energy to upwards to downwards. So these are the basic thing as per the UV extraordinary vessels. So first, you simply learn the name and concept in chapter 1, page number 5. Page number 5. The name of the 8 extraordinary vessels and their master points. In Chinese acupuncture, there are the 8 extraordinary vessels. The first, we learn the name of the 8 extraordinary vessels. These are the two types of the vessels. First, you remember yin vessels, yang vessels. So how many vessels? Total number of the 8 vessels. So 4 yin vessels and 4 is a yang vessels. So the name is maybe difficult to learn rather than other Chinese median name. So you always learn that this is the first name, conceptual vessels, because you are the familiar to CV meridian. The first name is a conceptual vessels, is a yin vessels, and second is a yang vessels, is a governing vessels. Before this semester, during the semester 1, semester 2, you are familiar to both name CV and the GV. These are the two vessels. The next vessels is vital vessels. So only you remember this name, vital vessels. Rather than Chongmo or penetrating vessels, better you learn the vital vessels. And the same is a yang vessels is called belt vessels. So second, yang is a belt. You just point out the name. And third, yin heel vessels and yang heel vessels. Four is a yin linking vessels and yang linking vessels. So meaning of this all vessels, the first is conceptual vessels. So conceptual vessels are the yin vessels, is a controlling vessels of the all yin vessels. And governing vessels is also called Dumo. This is the yang controlling vessels. Second is vital vessels. This is also called the gathering vessels. This is also gathering vessels. And second yang is a belt vessels, daimo vessels, or girdle vessels. Third name is yin heel vessels and yang heel vessels. So meaning of the healing process. This is for the recovery of the disease. So all type of the yin disease, these are the yin heel vessels. And yang type of the disease, this is the yang heel vessels. The fourth is a yin linking vessels. Linking meaning is a connection, connectivity. So fourth is a yin linking vessels, and this is also called yin regulating vessels. So it's regulate the energy. And next is a yang linking vessels. And the yang linking vessels is also connect yang linking vessels to other vessels, or this is also called yang regulating vessels.
So these are the few points, master points and the couple points. Each meridian has their own periodic points. They are meridian points. So conceptional and vessels both are the periodic meridians. Vital vessels and gradal vessels both are the pair meridian. Yin heel, yang heel, yin linking vessels and the yang linking vessels. Sir is also mentioned the points of the master points and couple points. The first is a lung 7. This is for the yin vessels, conceptual vessels. Spleen 4 for the yin vital vessels. Third, yin heel vessels, K6. Fourth, yin linking vessels, P6. And yang governing vessels, small intestine 3. Second, yang belt vessels, gallbladder 41. Third, yang heel vessels, UB62. And yang linking vessels, TW5. So maybe these are the 2 points missing in your book. Entities. So please note down the yang heel vessels, UB62, and yang linking vessels, TW5. अभी हमारे पास जो कंसेप्ट है उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स से हम एक्यूट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, स्ट्रक्चर, फंक्शन और जेनेटिक डिसीज को वी आर ट्रीटिंग बाय द ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हेल्प्स। और जब वेसल्स को समझना है तो आपको इतना ही समझना है कि ये वेसल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं और ये मेरिडियन के जैसी नहीं है, दिस आर द डिफरेंट वे। और इनके पाथवेज, इनके ट्रैक्स, इनके एनर्जीज फ्लोज, they are flowing in the other direction rather than our TCM classical methods. अभी इन कंट्रोलिंग वेसल्स को हम कंसेप्शनल वेसल्स कहते हैं, yin हील वेसल्स को हम रेगुलेटिंग वेसल्स कहते हैं जो कि रेगुलेट करता है, yang कंट्रोलिंग वेसल्स को गवर्निंग वेसल्स कहते हैं एंड yang हील वेसल्स को रेगुलेटिंग करने के लिए yang रेगुलेटिंग वेसल्स के नाम से भी जानते हैं। So now we are discussing the topological distribution of the 8 extraordinary vessels. So these are the 2 parts of our body. This one. So body has 2 parts, front and back. Body has 2 parts, upper and lower, right and left. In this way, it has total 8 parts. So how many parts? Front, back, upper, lower, right, left. So these are the total 8 divisions, and body has 8 regions having 8 extraordinary vessels. Related to each region is one extraordinary vessels. So when you see your treatise 6, page number 10, see the body area affected and the treat of the related extraordinary vessels. So extraordinary vessels
is very easy to learn and easy to treat for the patients. Because we are divided in our body in the different segments: front, back, upper, lower, right, left. So these are the different. So these are the total 8 points, and these are the all 8 points is connected with the extraordinary vessels. So now see this diagram and please correct your book. Maybe your diagram is something is wrong in your book. See the front side of the body. Upper side is right spleen 4. Left side is upper LU7. Lower side in right K6. And again left side of the lower limbs P6. This is for the all front side of the body points. So now back side of the body, is right side, upper limbs TW5, left upper side SI3, and the lower limbs in the back side, especially in the right side UP62, and left side of the lower limbs, these are the gallbladder 41. So when you see the ureteritis, maybe this time, these are the needed to correction. मुझे लगता है कि शायद अभी तक आपने जिनसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सेस पढ़ा, उन्होंने आपको कुछ करेक्शन नहीं दिया होगा, जहां तक मुझे लगता। द सेम दिस आर द मिस्टेक in our treatise 1. Same when you read the treatise 1 in the 5 element chapter, it is maybe due to some mistakes. Yin is a husband and yang is a wife. But when you learn in the universal theory, husband is a yang and wife is a yin. Same thing. So first you can change in your this chapter. So please note down that these points, these are the maybe in the correct, but if you can use in your examination purpose, as per this book, you are right. But universal literature, these are the all points, maybe few points is wrong. So please correct the point, then we were discussing. So here, when you see my slide, front side of the body, right, I mentioned the spleen 4, but your treatise is also mentioned the TW5, right? So you can use the both point, TW5 oblique SP4. You can use the both points, right? And one more correction. In the back side of your slide, your book is also mentioned the SI3 in the right side of the back area. So again, note the SI3 oblique TW5. And remaining the back side in the left side upper limbs, sir is also mentioned the spleen 4, but you can also add the spleen 4 oblique SI3. These are the exactly correct points. In the all lower limbs is the same. यहाँ पर जब आपने
राइस को समझा तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पहले और कुछ थे और मैंने आपको और कुछ लिखवाया, समझ में आ रहा है, राइट? क्योंकि मुझे तो स्क्रीन पर सारे लोग सोते हुए मिल रहे हैं, सिर्फ देविका मैडम ही है, तो मैं उन्हीं से पूछ पाऊंगा। और बाकी लोगों के साथ तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप मुझे ज्वाइन करें तो वीडियो से ज्वाइन करें, नहीं तो मेरी आवाज भी वैसी आएगी आपके जैसी, और मुझे पढ़ाने में भी मजा नहीं आता है। तो दिस आर द मेन, वी नीड द करेक्शन इन योर treatise. So please, again one more correction in your treatise, page number 5. अभी आपके पास दो विजन्स हैं, एक विजन आपका बुक का है, दूसरा मैंने दिया है, एंड आई विल शेयर द EOV book in the Ravindra sir, so you can receive by the Ravindra sir. And after your examination, please each and everyone, especially in the fourth semester student, all of you, you can learn the EOV in the right manner. So page number 5, your treatise, you can also use the points. The LU7 oblique K6, please note down by the pencil. This is the master points and couple points. Second, spleen 4 oblique P6. Third point, K6 oblique LU7. Fourth point, P6 oblique spleen 4. Again, please check. First point is yin, LU7 oblique K6. The first is a master and second is couple. Spleen 4 oblique P6, K6 oblique LU7, P6 oblique spleen 4. So now, extraordinary yang vessels, SI3 UB62. Second, gallbladder 41 TW5. The third, yang heel vessels, UB62 SI3. And fourth, yang linking vessels, TW5 oblique GP41. These are the corrections. So now, how we can use the application, how we can use the points. So first, very simple formula. जब भी आप किसी पॉइंट को ट्रीट करते हैं तो यहां पर आपको मास्टर और कपल पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है। अगर हमने मास्टर पॉइंट्स लिया तो हमें कपल पॉइंट्स भी लेना पड़ेगा, और अगर हमने कपल पॉइंट लिया तो फिर मास्टर पॉइंट भी लेना है। मास्टर एंड कपल, कपल एंड मास्टर, because it is the all vessels is connected to internally. So again, please see my slide after we are discussing. Okay, so please these are the cycle extraordinary vessels points, master points and couple points. Conceptual vessels LU7 is a master point, K6 is a couple point, governing vessels SI3 is a master point, and UP62 is a couple point. Next, Chongmo vessels spleen 4 P6, Daimo vessels gallbladder 41 TW5, Yin Hill vessels K6 LU7,
Yang V vessels UP62 Si3, Yin V vessels P6 spleen 4, and Yang V vessels TW5 gallbladder 41. These are the points. So these are the concept. For main, treat the master point of the left side and couple points of the right side. Right? For women, treat the master point of the right side and couple point on the left side. These are the opposite. For example, to treat the conceptional vessels in the male, treat the LU7 on the left and K6 on the right. In the women, treat LU7 on right and K6 on the left. Right? These are the formula. अभी जब हमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें मास्टर और कपल पॉइंट्स को ट्रीट करना है. So when you apply the master point, first you can apply the master point, after you can use the couple point. When you remove the magnets, जो सेकंड वाला मैग्नेट आपने लगाया पहले उसको रिमूव करेंगे, फर्स्ट वाले को बाद में रिमूव करेंगे. दिस आर द बेसिक फार्मूला एज पर द ईओवी. सपोज आपने पहले LU7 लगाया और K6 बाद में लगाया, तो पहले K6 को रिमूव करेंगे फिर LU7 को रिमूव करेंगे. अभी यहां पर बहुत सिंपल फार्मूला आपको यूज करना है और इस फार्मूले में आप अपने हिसाब से भी थोड़ा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. सपोज anyone is suffering the pain in the right side, right upper limbs. So now see the right side points, the right upper limbs. Which point? Spleen 4. You can also use single spleen 4 or as per the master and couple points. आप अपर लिम्स और दोनों लोअर लिम्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं. अभी आगे की तरफ तकलीफ है तो पीछे को भी ले सकते हैं. ऊपर है तो नीचे को ले सकते हैं, नीचे है तो अपर लिम्स के पॉइंट्स को ही डाउन कर सकते हैं. सपोज किसी को राइट साइड में अपर लिम्स में प्रॉब्लम है, तो यहां पर राइट साइड के अपर लिम्स के लिए हमारा जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास स्प्लीन 4. राइट, तो ये पॉइंट स्प्लीन 4 जो है, जब हमें इसको यूज करना है तो दिस इज अ मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट. जब भी हम पहले पॉइंट्स को यूज करते हैं तो वो हमारा मास्टर पॉइंट्स होता है, और दूसरे पॉइंट को जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा कपल पॉइंट्स होता है. आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको अगर समझना है तो आप सिंगल वन पॉइंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सपोज राइट अपर लिप्स में प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द राइट अपर लिप्स. As per the EOV, you can select the right upper limbs point, spleen 4. No need to other points. Sometime problem in the left hand, in our left side in the upper limbs, especially in the front side. So this condition we are using the LU7. Suppose the problem in the right lower limbs, in the right leg, this is special points for the K6. And problem in the lower limbs in the left side, we are using the P6. Right? आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हमें यूज करना है. हमने बॉडी को फ्रंट में बैक में डिवाइड किया और फ्रंट में भी जब बाटा बॉडी को तो 4 पार्ट्स में डिविजन किया. अपर राइट, अपर लेफ्ट, अपर लोअर राइट, लोअर लेफ्ट साइड. So these are the 4 points in the front side and again 4 points in the back side. So these are the all
points select as a master and couple points. तो जब प्रॉब्लम कुछ एक पॉइंट पर है, एक एरिया में स्पेसिफिक है, और आपको वहां पर मास्टर पॉइंट लगता है कि हमें मास्टर पॉइंट का यूज करना है, तो सेम टाइम आपको कपल पॉइंट्स को भी यूज करना चाहिए. सो व्हाई वी आर यूजिंग द मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट्स? बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मास्टर एंड द कपल पॉइंट्स, एक्सचेंज द एनर्जी. एक में एनर्जी ज्यादा है तो वो दूसरे को दे देगा, और दूसरे में एनर्जी कम है तो वो पहले से ले लेगा. दिस आर द बेसिक फार्मूला. सपोज आपको लेफ्ट साइड के स्केपुला में बहुत पेन है, तो यहां सिंगल एक पॉइंट आप SI3 भी यूज कर सकते हैं. आपको लोअर लिम्स में पैरों में प्रॉब्लम है, स्पेशली इन द राइट साइड, so that condition you can treat the UB62. But I request to each and everyone, there's all 8 points you can use in the classical points rather than beyond. When you use the classical points, it is more effective rather than beyond maintenance. So these are the very simple theory for the EOV, because the each and every meridians, their functions, their points are the fixed. अभी आपको इतना ही करना है कि राइट में प्रॉब्लम है कि लेफ्ट में प्रॉब्लम है, अपर लिम्स का प्रॉब्लम है, लोअर लिम्स का प्रॉब्लम है, फ्रंट साइड में है, बैक साइड में है, और बस उसको देखकर एक सिंगल एक क्लस्टर मैग्नेट यूज कर लीजिए. नो नीड फॉर द टोनिफिकेशन और सेडेशन, एज यू विश. बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि दिस इज द प्रॉब्लम इज ड्यू टू एक्सेस एनर्जी, सो दैट कंडीशन यू कैन सेट इट. और जब आपको लगता है कि वहां पर कोई एनर्जी बढ़ी है उसकी वजह से है, तो सेट किया, और कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं. आप टोनिफिकेशन और सेडेशन जानते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं. जब इन वेसल्स को स्टडी करेंगे आप, तो सिर्फ 8 पॉइंट से आप पूरी होल बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं बाय द दिस डायमंड डायग्राम. और ये डायमंड डायग्राम जो है, हम सिंपली क्लासिकल पॉइंट्स पे यूज करें तो इट इज मोर इफेक्टिव रादर देन प्योर. लेकिन सम टाइम आप क्लासिकल यूज नहीं कर सकते, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज द बियोल पॉइंट्स. आप बियोल पर भी इनको यूज कर सकते हैं. लेकिन कोई चीज अगर फिजिकल फॉर्म में है, और कोई फॉर्म फिजिकल है ही नहीं, इनविजिबल फॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि वहां पर फिजिकल पॉइंट इज मोर इफेक्टिव रादर देन मेटाफिजिकल पॉइंट्स. यहां पर सर ने मेंशन किया है कि जब बार बार वेदर चेंज होता है और कोई डिसीज पैदा हो जाती है, तो एज पर द ईओवी ये कहता है कि उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्टेड है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है. यह सर ने आउटसे मेंशन किया है. इफेक्ट्स ऑफ द ईओवी, treatment on the immune system of the body, circulate immunity power. The three EOV together, Chongmo does this function by protecting the chest. Governing vessels does it the same function by protecting the back, and conceptual vessels does it by protecting the abdomen. यहाँ आपके 3 सिस्टम्स का कंट्रोल है, चेस्ट का, बैक का और पेट का. इन 3 सिस्टम्स को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो ईओवी करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स. अभी बहुत सिंपली आपको याद रखना है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स? दे आर 8 वेसल्स. 4 वेसल्स इज यिन एंड 4 वेसल्स इज यांग. अभी इसका डिवाइडेशन कैसे होगा? आपके पास डायग्राम है, उसमें एक ड्राइंग बना के अपने कहीं रूम पे लगा दीजिए. वहां अपर लिम्स, लोअर लिम्स, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, ऐसे 8 पॉइंट्स को यदि आप उसमें मार्किंग कर लेते हैं फॉर द फ्यू डेज, मुझे लगता है कि ये आपको आ जाएगी थ्योरी, आप इसको यूज कर सकेंगे.
because these are the very simple. Sometime, sir, is also mentioned in the page number 13. According to body area, any problem in the cervical and upper thoracic area, this is the page number 13, huh? Spleen 4 you can use. Any problem is related to cervical. These are the very simple tool. You can use the SP4 in the classical points. So SP4 is located to right big toe rather than left big toe. ये स्प्लीन 4 पॉइंट जो है वो आपके राइट पैर में ही आने वाला है, तब हम उसको यूज कर सकते हैं. द सेकेंड, एनी प्रॉब्लम ऑफ द हैंड, ऑलवेज यू रिमेंबर, आपको कभी भी हाथ का प्रॉब्लम है, अपर लिम्स का प्रॉब्लम है, so this condition you can treat by the SI3. These are the very simple formula. Now always you remember, when pain is a increase, so it means it indicate the your energy is a deficient or your energy is a stagnant. तो यहां पर जब भी आपको कहीं दर्द आया तो आपके शरीर में कहीं कोई ऊर्जा रुक गई है, ऊर्जा ऑफसेट हो गई है, एनर्जी में स्टैग्नेंट आ गया है. और जब कोई चीज रुक जाएगी तो क्या होगा, नुकसान करेगी, खराब हो जाएगी. तो दिस आर द कंसेप्ट इन द क्लासिकल एक्यूप्रेशर. अभी आपके हाथ में कोई तकलीफ है तो वैसी कंडीशन में आपको सिंपल मास्टर कपल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक SI3 पॉइंट को ही यूज करना है. अभी यहां पर मेंशन किया है सर ने, एनी प्रॉब्लम ऑफ द राइट हैंड you can treat the LU7, and any problem of the left leg you can treat by the UB62. Any problem of the right leg you can select the P6 point. Any problem in the lower spine you can read the gallbladder 41. Problem in the face and chest, so that condition you can treat the TW5. For the problem from the diaphragm to anus you can use the K6. अभी जितने भी पॉइंट्स हैं, इन मास्टर पॉइंट्स को, कपल पॉइंट्स को अगर हम समझें तो दिस आर द ऑल पैरेडिक पॉइंट्स, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं. और एज पर द TCM थ्योरी वी अंडरस्टैंड व्हेन वी आर सफरिंग द डिसीज, हम बीमार क्यों होते हैं, जब हमारे शरीर में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो असंतुलन या इनबैलेंसेस हो जाते हैं. सो दिस आर द मेन कॉज. अभी जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके साथ में यू कैन लर्न द पोएट्री इन द दिस सेम चैप्टर. पोएट्री को सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप उसको जब पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है. अभी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं. हमने यहाँ पर जितनी भी वेसल्स थे उनके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी वेसल्स में हमें कौन सा पॉइंट्स लेना है, राइट में कौन सा पॉइंट्स लेना है, लेफ्ट में कौन सा पॉइंट लेना है. अभी उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो हो सकता है हमारे पास, हम इन सारी मर्डन्स के वेसल्स के हमारे पास जी क्लेफ्ट पॉइंट्स हैं. तो ऑलवेज यू कैन यूज द आफ्टर this points, all classical points, you can also use the Z cleft point. Why we are using the Z cleft point? The Z cleft are gaps in the body where qi and the blood. तो यहां पर हम Z cleft points को देखें तो ये पॉइंट्स जो है वो आपका एक्मुलेटेड पॉइंट्स होता है, और जहां पर वो एनर्जी जब एक जगह अक्मुलेट हो जाती है तो उसको डिस्पेरेंस का काम करता है, उसको आगे की तरफ भेजने का काम करता है. अभी यहां पर आपको एक ही थ्योरी याद रखनी है कि मेन में कौन सा पॉइंट यूज करेंगे. और आप जस्ट 1 मिनट, नमस्ते भाई साहब, हेलो, नमस्ते भाई साहब.
अभी यहां पर हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास में चाइनीज मेरिडियंस में यिन मेरिडियंस है, यांग मेरिडियंस से, बोथ आर द पैरेडिक मेरिडियन, कपल मेरिडियंस। तो ऐसे ही 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी वेसल्स में भी हमारा ये जो है ये कपल वेसल्स है, और उसमें यिन वेसल्स की भी कपल वेसल्स है और यांग वेसल्स की भी कपल वेसल्स है। और इनके मास्टर पॉइंट्स और कपल पॉइंट्स है। अगर मास्टर पॉइंट्स बॉडी के ऊपर का होता है तो कपल पॉइंट्स हमारे लोअर लिम्स का होता है। एंड व्हेन वी ट्रीट द मास्टर पॉइंट्स इन द lower limbs, the couple points is for the upper part of the body. जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं, हर वेसल्स में एक स्टार्टिंग पॉइंट्स है और एक उसका क्लोजिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। और इन वेसल्स का एक अपना स्पेसिफिक पाथवे है रादर देन द क्लासिकल मेरिडियंस। क्लासिकल मेरिडियंस के पाथवेज डिफरेंट हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के पाथवेज डिफरेंट है। दीज आर द स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स। अभी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में हमें कुछ वेसल्स के जी क्लेफ्ट पॉइंट्स भी मिलेंगे। अभी यहां पर आपकी बुक में मेंशन है, व्हेन यू ओपन इन पेज नंबर 19 इन कंसेप्शनल वेसल्स, सो प्लीज ओपन चैप्टर 2 कंसेप्शनल वेसल्स। मास्टर पॉइंट is a conceptual vessels LU7. Couple point is K6. Starting points of the conceptual vessels is the CV1 and pass through the CV1 to CV24. Sir is also mentioned in the Leo connecting points, Ziklev points, treatment protocol for the male and the female. Male LU7 in left, K6 is right, stomach 36 is Ziklev point. For the female, LU7 is right, K6 is left, CV1 left and right. These are the connecting points. So area of the body include abdominal, thoracic, lungs, throat and the face. अभी जब भी स्पेशली कोई प्रॉब्लम है, इट्स कनेक्टेड टू योर abdominal area, thoracic area, lungs, throat or the face. So that condition you can treat the conceptual vessels. Otherwise, also you remember the conceptual vessels is a center line. If any problem in the front side of the center line area, you can treat by the conceptual vessels. तो जब भी किसी को कंसेप्शनल वेसल्स में प्रॉब्लम है, तो कंसेप्शनल वेसल्स के जो आपके पास मास्टर पॉइंट्स हैं, कपल पॉइंट्स हैं, आप उसको यूज करेंगे। आपको कितना सिंपल सा याद करना है कि मेल में कौन से पॉइंट्स को यूज करना है, फीमेल में कौन से पॉइंट्स को यूज करना है। एंड these are the very simple points, but when you use these points in the classical points, यदि आपको समझ में नहीं आता है टोनिफिकेशन, सेडेशन, so you don't worry, you can apply the only cluster magnets. सिंपली आप अगर क्लस्टर मैग्नेट्स को एड ऑन कर लेंगे तो ये भी आपको हेल्प करने वाला है। नो नीड फॉर द टोनिफिकेशन और सेडेशन। व्हेन वी आर यूजिंग द टोनिफिकेशन एंड सेडेशन, कि जब हमें ये पता है कि कहां पर हमें एग्जैक्टली उस पॉइंट को टोन करना चाहिए या सेडेशन करना चाहिए, उस कंडीशंस में हम टोन सेडेट करेंगे। अदरवाइज यू कैन यूज द क्लस्टर मैग्नेट एंड क्लस्टर मैग्नेट इज वेरी गुड। अगर क्लस्टर मैग्नेट नहीं है तो यू डोंट वरी, आप क्या कर सकते हैं, एक मटर सीड्स को यूज कर लीजिए, वो आपको हेल्प करने वाला है।
दिस आर द स्टिमुलेटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट को स्टिमुलेट करने में भी ये आपको हेल्प करेगा। अभी फंक्शंस ऑफ द कंसेप्शनल वेसल्स, स्पेशली कंसेप्शनल वेसल्स को हम कब यूज करने वाले हैं, आपको आपकी मेमोरी में रखना है। कंसेप्शनल वेसल्स is the front side of the body. So when you are suffering the, these are the first point and this is the last point, right? First and last point. So the main problem is urogenital problem, male or female, or this is especially we are using the female disorders, especially in the gynec disorders or menstruation related disorders. We are use this point also for the urogenital in the male related disorders. So when you are treat the any vessels in extraordinary vessels, you can see they are on pathways. और जो उसका पाथवे है उस पर जहां पर भी जो ट्रैक पर वो वेसल्स जाती है, हमारा उसके साथ कनेक्शन बनने वाला है, हमें उसको यूज करना है। और दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। So these are the, especially in the urogenital area, and the center line is your abdominal area. So abdominal area is also connected your gastrointestinal disorders. Especially this is for the gastrointestinal disorders. So now this is the chest. So this area represent your lungs related problem, cardiac problem, emotional disorders, and it goes upward to your throat or your neck related problem. तो यहाँ जब हम किसी भी वेसल्स को देखते हैं, मेरिडियंस को देखते हैं, तो फर्स्ट यू कैन सी द देयर ट्रैक कि वो कैसे जा रही है। जहां पर वो भी जाती है उस आसपास के सराउंडिंग एरिया को वो नरिशमेंट देने का काम करती है। और जब नरिशमेंट देगा तो वो ग्रोथ करेगा, और नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो डिजेनरेशन भी करेगा। सो बोथ कंसेप्ट वी आर यूजिंग द सिंगली कंसेप्शनल वेसल्स। हमने क्या किया कि वहां पर सिंपली एक कंसेप्शनल वेसल्स को यूज किया, और यहाँ पर सर ने ऑलरेडी आपको पॉइंट्स दे के रखे हैं, आपको आपका ब्रेन भी यूज नहीं करना है, बट यू कैन थिंक अबाउट द कंसेप्शनल वेसल्स कब यूज करनी है, अदर वेसल्स को कब यूज करनी है। आपको वो समझ में आ गया तो एक आपको विजन मिल जाएगा। और कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट सिंपली इस बुक में जो डायमंड बना है, फ्रंट साइड, बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सिंपल एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। अगर आपको अपर लिम्स में फ्रंट में प्रॉब्लम है दोनों तरफ, यू कैन यूज द क्लस्टर मैग्नेट इन द फ्रंट साइड। अभी लोअर लिम्स में भी प्रॉब्लम है, अपर लिम्स में भी प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज द 4 मैग्नेट्स। आप 4 मैग्नेट लगा दीजिए। और भी समझ में नहीं आता है, आप 8 मैग्नेट लगा दीजिए। बहुत सिंपल है, कैसे भी पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, बट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द पॉइंट्स, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आने लगेगा, तब आप उसको और अच्छे से यूज कर सकेंगे। अभी सेम फर्स्ट कंसेप्शनल वेसल्स इट्स treat the yin deficiency. Second, it's treat the male menopausal syndrome. सेम जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज सिंड्रोम होता है, वैसे ही मेल में भी मेनोपॉज सिंड्रोम होता है। The third, it's treat the regulate the uterus and the blood in women and enhance regulate the following menstruation cycle, conceptional, fertility, childbirth, and menopause. So this is the related to yin blood deficiency symptoms है, तब भी इसी को हमें यूज करना चाहिए। The fourth is a conceptional vessels treat the infertility causes by the blood deficiency in the uterus. ये यूट्रस में ब्लड डेफिशिएंसी होगा तब आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। The fifth is a conceptional vessels treat the following menstruation problem: dysmenorrhea, amenorrhea, menorrhagia and metrorrhea. पहली कंडीशंस जो है वो है आपकी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो इस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कंडीशन को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। सेकंड कंडीशन जो है वो है अमेनेरिया, कि जहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा।
तो सेकंड कंडीशन को हम कहते हैं कि जहां पर साइकिल नहीं होता है। थर्ड इज ए मेनोरेजिया, दिस इज कॉल्ड एक्सेस ब्लीडिंग, इसको हम कहते हैं एक्सेस ब्लीडिंग। एंड फोर्थ इज ए मेट्रोजिया, मतलब एक्सेस ब्लीडिंग विद द ब्लैकिश विद द क्लॉटिंग, तो इसको हम एक्सेस कंडीशंस कहते हैं। अब यहां पर जब आपके पास डिसीज है तो आप उसमें अलग अलग तरीके से इस पॉइंट को कैसे यूज करेंगे, ये ऑलरेडी सर ने मेंशन किया इन योर ट्रिटाइज। आपके ट्रिटाइज में लास्ट में यहाँ सर ने मेंशन किए हैं पॉइंट्स। These are the all formula for the as a single points you can use. Page number 307, single and double points. आपकी टेक्स्ट बुक में एक रेडी नेक्टर है, यहाँ पर एब्डोमिनल रिलेटेड प्रॉब्लम, स्प्लीन 4P6, या फिर और किसी प्रॉब्लम के लिए भी P6SP4 को मास्टर एंड कपल पॉइंट को, कपल एंड मास्टर पॉइंट को यहाँ पर क्लब करके दिया है। तो जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा। So now we are discussing for the examination preparation, कि भी एग्जामिनेशंस के लिए उसको कैसे समझना है। तो हमारे पास में 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं, 4 यिन हैं, 4 यांग हैं, और इन सबके मास्टर पॉइंट्स और कपल पॉइंट्स हैं। यदि आपने मास्टर पॉइंट लगाया तो आप कपल पॉइंट यूज करेंगे, और कपल लगाया तो मास्टर यूज करेंगे। मेल फीमेल का डिविजन आपके पास है कि कैसे उसको डिवाइडेशन करना है, लेफ्ट में राइट में। एंड आफ्टर डेट यू कैन लर्न द कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्शनल वैसेस। आपको कंसेप्शनल वैसेस को पढ़ना पड़ेगी जैसे आपने क्लासिकल मेरिडियन में चाइनीज मेरिडियन को पढ़ा था। और जब पढ़ते जाएंगे, इनको मार्क करते जाएंगे, तो धीरे धीरे कुछ दिन महीने में आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, और वहां पर आप सिंगल क्लासिकल पॉइंट्स मतलब ईओवी पॉइंट्स को लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड दिस आर द बेस्ट वे फॉर द ट्रीटमेंट। नो नीड फॉर द चाइनीज पॉइंट और अदर पॉइंट्स। आप सिंपल कितने पॉइंट से ट्रीटमेंट करना सीख जाएंगे, 8 पॉइंट्स को लगाकर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं बॉडी में। अभी इन 8 पॉइंट्स की लोकेशंस आपका डायग्राम बना है, उसको यूज कर लीजिए। लेकिन अभी एग्जामिनेशन पर्पज से आपकी बॉडी में जो डायग्राम पहले से बना हुआ था आपकी बुक में, आप उसी को यूज करिए। और उसके बाद में मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा, तो आफ्टर एग्जामिनेशन यू कैन रीड द दैट नोट्स, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको एक नया विजन देंगे, हेल्प करेंगे। अभी इतने को लेकर कहीं कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस प्लीज? एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? देविका मैम, साथी मैम, प्लीज। ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा डाउट आएगा, जो पढ़ेंगे नहीं तो डाउट आएगा ही नहीं। Sir, I'm from semester 1, sir, actually. You are from semester 1. 1. Okay, no problem. So why you are joining the semester 4 class? Doesn't matter, sir. I want to learn. Okay, no problem. ठीक है. So who is from the semester 4? If any question you can ask me. जो लोग भी सेमेस्टर 4 से हैं, कोई क्वेश्चन है, डाउट से, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इसको स्टडी करिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। प्रियंका जी, एनी क्वेश्चन? सर हमें जैसे एग्जाम पर्पज के लिए फिर जो बुक में डायमंड डायग्राम दिया हुआ है वही उसको उसी यूज को। करना है, वही यूज करना है, अभी वही यूज करिए। एग्जामिनेशन के ओके बाद नया विजन आप यूज करिए, एग्जाम तक मत करिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो रिमेनिंग। So if it is goiter, any of these points can be used? Sorry, Goiter, goiter. yeah. You can use the index in your book. This index in your book, page number 30, I'm 307. 307. second semester. You are second semester. Yeah, yes, sir. So when you are joining the 4th semester, that time you can study this book. So now please no need for this book, right? No, Directly actually, you can use the. Actually, I know something about extraordinary
Yeah. So Yes, no problem. So you are in second semester, so you can directly apply the 2 points yeah, TW5 yeah. in the right side. The TW5, ah, just 1 minute, huh? I will explain you. TW5 in the right side okay. and It is a very UB62 for the lower limbs, but opposite directions. TW5 in the right hand, yes, classical, ah, and UB62 in the lower limbs in the left side. left side. Okay. Both cluster magnet you can apply for the few days and after you can see the result. Goiter. Yeah, Goiter. Oh, yeah. good, good. Okay. So no need of taking points from the neck side. No need for the points to make side, just you can apply the only 2 points TW5 and UB62. These are the Okay. master and couple points. Okay, sir. Okay, thank you very much. Yeah. Okay. Okay. और किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स प्लीज नहीं है ठीक है सो विद द परमिशन ऑफ द रविंद्र सर कैन वी क्लोज टुडे सेशन सर रविंद्र सर प्लीज रविंद्र सर शायद नहीं है मुझे लगता है ओके नो प्रॉब्लम तो कल फिर आपके साथ कनेक्ट होते हैं और एक बार उसको स्टडी करिए स्पेशली एक और रिक्वेस्ट था कि जितने लोग सेमेस्टर 4 के हैं आप ही पढ़िए बाकी लोग मत पढ़िए जब आप सेमेस्टर 4 में आ जाएंगे तब पढ़िए ताकि आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स नहीं हो सम टाइम सेमेस्टर 1 ही अंदर नहीं जाता है तो फिर 2 तो फंस जाएगा और 3 भी कंफ्यूजन करेगा 4 और कंफ्यूज करेगा तो स्टेप बाय स्टेप यू कैन ज्वाइन द